Hello student. Now today our topic of discussion is molecularity and order of reaction. Right? Start from molecularity and order of reaction. Molecularity. Now what about molecularity of reaction? What do you mean by molecularity of reaction? Minimum number of reactant molecule participate in any chemical reaction is called their molecularity. Minimum number of reactant molecule, जितने भी minimum number of reactant molecule किसी reaction में participate करते हैं, that is called molecularity of that reaction. Right? For example, if you take this reaction H2O2 convert into H2O plus half O2, because here only one reactant molecule participate, one reactant molecule of H2O2 participates, so this is called their molecularity is 1. Their molecularity is 1, right? If you take second reaction, for example, inversion of cane sugar, inversion of cane sugar, right, means C12H22O11 plus H2O convert into C6H12O6 plus C6H12O6, right? So this is because one molecule of sugar and one molecule of water participate. Because in this reaction one molecule of sugar and one molecule of water participate. So the molecularity of reaction is 2. So the molecularity of reaction is 2, right? Third, H2 plus Cl2 convert into HCl. Molecularity of reaction is also 2, right? So these are some reaction along with their molecularity. Because one reactant molecule participates in here, so one molecularity. Two molecule participates, so two molecularity. Two molecule participates, so two molecule. So it means minimum number of reactant molecule participate in any reaction, that is their molecularity, right? जैसे कि आप ले सकते हो कोई क्लास है, उस क्लास में सपोज दैट 100 स्टूडेंट है, तो उस क्लास की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? कोई क्लास है उसमें 100 स्टूडेंट है, तो उस क्लास की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 100, राइट? बिकॉज 100 स्टूडेंट, मिनिमम कितने स्टूडेंट वहां पे? 100 है, सो देयर मॉलिक्यूलरिटी इज 100, राइट? नाउ सेकंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस नंबर ऑफ दोज रिएक्टेड मॉलिक्यूल which affect rate of reaction, right? Number of those reactant molecule, if we change their concentration, then rate of reaction change, right? Number of those reactant molecule, if we change concentration of those reactant, then rate of reaction change. It means वो reactant molecule जिनकी concentration में change करने पर, जिनके नंबर में चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज होती है. दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन. उसे क्या कहेंगे? उस रिएक्शन की ऑर्डर कहेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, राइट? तो बिकॉज हियर वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 participate. If we change concentration of H2O2, then rate of reaction change, right? If we change concentration of H2O2, then rate of reaction change. So order also 1. So order of also 1. Molecularity भी कितनी है इसकी? 1 है. ऑर्डर भी इसका क्या है? 1 है. नाउ सेकेंड पॉइंट, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर. अगर आप बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन सुगर की, इफ यू चेंज कंसंट्रेशन ऑफ सुगर, if you change number of sugar molecule, right, then rate of reaction change. If you increase number of sugar molecule, then rate of reaction increase. But if you change number of water molecule, then rate of reaction not change. Then rate of reaction not change. It means their molecularity is 2, but order is 1. Order is 1 and molecularity is 2.
and this type of reaction is called pseudo unimolecular reaction. क्या कहते हैं इसका नाम? pseudo unimolecular reaction. pseudo means झूठी, unimolecular reaction मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी इसकी? 2, बट ऑर्डर कितना इसको? 1. So this type of reaction is called pseudo unimolecular reaction, where molecularity is 2 but order is 1. Because if we change concentration of cane sugar, then rate of reaction change. But if you change concentration of H2O, then rate of reaction not change. So this is pseudo unimolecular reaction, molecularity 2 and order 1. This is also important point, pseudo unimolecular reaction, right? After that, next reaction, H2 plus Cl2 convert into 2HCl. If you change concentration of H2, then rate of reaction not change. And if you do concentration of Cl, then rate of reaction not change. It means either you change concentration of H2 or concentration of Cl2, rate of reaction not affected. It means molecularity is 2 and order is 0. Because rate of reaction not affected or not changed if you change concentration of any reactant. So their order is 0. So their order is 0. It means order sometimes 0 but molecularity never 0. It means order sometimes 0 but molecularity not 0. Clear? So those number of reactant molecule, if we change their amount or if we change their concentration, then rate of reaction change. Then those number is called order of that reaction, right? तो ऑर्डर डिफरेंट चीज होगी, मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट चीज होगी. आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि मैंने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आपको कहा कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, राइट? आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट है. तो आपकी क्लास की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 100 होगी, राइट? बट अब आपको ये देखना उन 100 में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो सकते हैं. Those students are important for result of that class. किसी क्लास का रिजल्ट किन पे डिपेंड करता है? उन स्टूडेंट पे डिपेंड करता है जिनके पास कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन नॉलेज हो, जो पास हो सकते हैं, जिनको कम से कम 40% आता है, उस पे रिजल्ट डिपेंड करता है. अगर उन स्टूडेंट के नंबर में चेंज हो गया ना, तो रिजल्ट जो होगा क्लास का वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा. लेकिन अगर सपोज दैट आपकी क्लास में ऐसे 80 स्टूडेंट हैं जिनके पास एक्टिवेशन नॉलेज है, जो पास हो सकते हैं, राइट राइट, तो जो 20 स्टूडेंट हैं उनके नंबर में अगर चेंज हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन या रिजल्ट ऑफ क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क केवल उनसे पड़ता है जिनको कम से कम 40% नॉलेज है. अगर वो स्टूडेंट कम हो जाते हैं या वो स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ या घट जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है. इट मींस for result of class only those student important which have at least activation knowledge, right? And order वो जो 80 होगा that is order of your class. 100 is molecularity of your class and order of your class is 100 is molecularity of your class and 80 is order of your class. Because 80 those number of student, if you change their concentration, if you change their number, then rate of reaction change. So order is a different thing and molecularity is a different thing. Clear होगी बात क्या? Okay. Now I want to differentiate molecularity and order of reaction. अब difference क्या है? अगर आप difference की बात करें, what are differences between order and molecularity of reaction? तो first difference तो मैंने पहले क्लियर किया. Order may be 0 but molecularity never 0. Order and molecularity, तो ऑर्डर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है बट मॉलिक्यूलरिटी नेवर 0, राइट? फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, ऑर्डर मे बी इन फ्रैक्शनल वैल्यू. इट मे बी 1/2 or 2/3,
right? It may be fractional value also, 0 हो सकती है, it may be fractional value, but molecularity never fractional value. It is 1 2 3 4 5 6 like that, right? तो ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, right? नेक्स्ट थर्ड थिंग, इफ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मींस वेयर मोर देन वन स्टेप, जहां पे क्या है, मोर देन वन स्टेप है, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, राइट? तो फॉर ईच वन स्टेप देयर इज नो ऑर्डर, right? That step out of three, that step which is slow, that is called slow step, is called rate determination step. Slow step को क्या कहते हो आप? Rate determination step. And number of reactant molecule participate in slow step or rate determination step is called order of that reaction. If suppose that in first step 2 molecule participate, in second step 2 molecule participate, and in third step 3 molecule participate. So what about order of that reaction? Order of reaction means number of reactant molecule participate in slow step, number of reactant molecule participate in slow step or in rate determination step. तो उसकी order क्या होगी? 2. समझ गए आप बात, राइट? तो for a complex reaction only one order, and that depend on number of reactant molecule participate in slow step or in rate determination step. Clear होगी बात क्या? Okay. Now what about molecularity? For if in first step, अगर पहले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल है, it means पहले स्टेप की molecularity क्या है? 2 है. If in second step 2, then second step की molecularity क्या है? 2. If in third 3, it means third की क्या molecularity है? 3. तो each one step give their separate molecularity. In complex reaction, each one step give their separate molecularity. First step की molecularity is different. Second step की molecularity depend on number of reactant molecule in that step. Third step की उस पर depend करेगी, right? तो in complex reactions, these differences, right? Now, next one, fourth point. If we talk about order of reaction, अगर हम बात करते हैं order of reaction, right? It is last point. If you talk about order of reaction, तो number of order, how do you calculate order? तो order को आप ऐसे ही calculate नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा. First you should know about slow step, which one is slow, which one is fast step, right? तो experimentally आपको check करना पड़ेगा, right? Experimentally आपको देखना पड़ेगा which step is fast, which step is slow, and at the end you can say that this is slow step and number of reactant molecule participate in that step is their order. तो order के लिए आपको experimentally analyze करना पड़ेगा, right? But if you talk about molecularity, it is a theoretical way. Theoretically आप calculate कर सकते हो number of reactant molecule, minimum number of reactant molecule, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, right? तो theoretically आप calculate कर सकते हो molecularity को. तो molecularity you can calculate theoretically, but for order you need to do some experimental calculation, right? So it is experimental value and it is theoretical value. So these are 4 important difference between order and molecularity of reaction, right? So this is complete about molecularity of reaction, order of reaction, and difference between order and molecularity of reaction, right? So this is sufficient for today, right? So thank you very much for watching this video.